हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कॉन्सेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है एलिमेंटरी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट सम प्रॉपर्टीज दैट ग्रुप्स एलिमेंट सैटिस्फाइड। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रुप क्या होता है पढ़ा था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब में जाकर देख सकते हैं। तो हियर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। दैट मीन्स इन ए ग्रुप जी विथ ए बाइनरी ऑपरेशन द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। तो चलो इसे प्रूव करते हैं। लेट अज्यूम कर लेते हैं ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये यूनिक नहीं है। Let's assume E and E dash are two distinct identity element in group G। तो अगर हम E को E dash के साथ ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पर E and E dash जो है ये दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। तो अगर E dash को हम यहाँ पर एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर करें तो हमें पता है जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज होता है ग्रुप में, हम किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट्स के साथ अगर ऑपरेट करते हैं तो सेम एलिमेंट आता है। यहाँ पर ये हो जाएगा E। Let this is denoted as equation 1 and again E operate with E dash में से। तो अगर हम E को एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर कर ले तो ये हो जाएगा E dash which is denoted as equation 2। तो here from this two equation E equal to E dash, that means identity element is unique। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इन थ्योरम नंबर 2 कैंसलेशन लॉ, फॉर एनी एलिमेंट A B C in G, here G is a group with operation star। If B into A equal to C into A, then B equal to C। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर जो B into A है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसका मतलब जो है B ऑपरेट विथ A, दैट मीन B स्टार है। टिपिकली इसे हम ऐसे लिखते हैं B into A। तो यहाँ पर B A इक्वल टू C A है, तो यहाँ पर A जो है राइट हैंड साइड में है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ होगा B इक्वल टू C। सिमिलरली A अगर लेफ्ट साइड में होगा AB इक्वल टू AC, देन यहाँ पर ऑल्सो ए कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पर होगा B इक्वल टू C, विच इज कॉल्ड लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। तो चलो इसे प्रूव करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है A B and C belongs to G and BA इक्वल टू CA। सिंस A belongs to G, A इनवर्स ऑल्सो belongs to G। हमें पता है कि ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। लेट दिस डिनोटेड एज इक्वेशन 1। सिंपली मल्टीप्लाइंग A इनवर्स इन द राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा BA into A inverse equal to CA into A inverse। Since these elements belongs to group, तो ग्रुप जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये हो जाएगा B into A inverse equal to C into A inverse। तो यहाँ पर बाय इनवर्स प्रॉपर्टी ये जो A into A inverse है ये हो जाएगा आइडेंटिटी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा B into E equal to C into E एंड बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये हो जाएगा B इक्वल टू C। सिमिलरली आप लेफ्ट कैंसलेशन लॉ के लिए प्रूव कर सकते हैं, सिंपली A इनवर्स को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। एवरी एलिमेंट इन ए ग्रुप हैज ए यूनिक इनवर्स। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का इनवर्स जो है ये यूनिक होगा। तो लेट G बी ए ग्रुप एंड ए आर्बिटरी एलिमेंट A बिलोंग्स टू G। तो लेट यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं A का जो इनवर्स है इस ग्रुप G में ये यूनिक नहीं है। लेट अज्यूम B and C are two distinct inverse of A in this group, that means B and C belongs to G। So by definition of inverse in group, since B is a inverse, we can write it as AB equal to BA equal to E, where E is identity, write it as equation 1। and since C also the inverse of A, we can also write it as A into C equal to C into A equal to E, which denoted as equation 2। तो बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हम B को ऐसे लिख सकते हैं B इक्वल टू B इंटू E, एंड बाय इक्वेशन 2 वी कैन राइट E एज A इंटू C। तो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं B इंटू A इंटू C। तो बाय इक्वेशन 1 यहाँ पर B जो है इनवर्स है A का, तो ये हो जाएगा BA इक्वल टू E, एंड बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी E इंटू C जो है ये हो जाएगा C। From here we get B equal to C। That means यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट जो है ये यूनिक होगा।
Next है important inverse property. Let G be a group with binary operation and A and B belongs to G with A inverse and B inverse also belongs to G. Then A inverse of inverse equal to A. Then second inverse of product of AB equal to B inverse A inverse, which is generally called shoes and socks property. तो चलो इसे प्रूव करते हैं. तो हमें गिवन है इन ए ग्रुप G A B A inverse and B inverse belongs to G, and by definition of inverse we know that A into A inverse equal to E, where E is the identity, and also by inverse property, since A inverse belongs to G, that implies A inverse of inverse also belongs to G, क्योंकि ग्रुप के अंदर किसी भी एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है. Simply multiplying A inverse of inverse in this equation, we get A inverse of inverse into A inverse A equal to A inverse of inverse into E. Since these elements are in group, so it satisfies associative property. So by associative property, we can write it as A inverse of inverse into A inverse into A equal to A inverse of inverse into E. So here A inverse of inverse into A inverse. So by inverse property, this will be E, which is identity, into A equal to A inverse of inverse into E. So by identity property, this will be A equal to A inverse of inverse. Next प्रूव करते हैं shoes and socks property. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AP into B inverse A inverse equal to, by associative property, A into B inverse into A inverse. So by inverse property, this will be identity. Similarly, by identity property, ये हो जाएगा A into A inverse. And by inverse property, this will be E. तो यहाँ पर हमें मिलेगा AP into B inverse into A inverse equal to identity. Simply multiplying inverse of AB in this equation, we get AP inverse into AB into B inverse A inverse equal to AP inverse into E. This will be identity. By identity properties, we get AB inverse equal to B inverse A inverse. Next way, integral powers of an element in group. Let G be a group with a binary operation and with identity element E. Let for any element G belongs to G, there is an integer n such that G to the power n is defined as G to the power 0 equal to E, which is identity element. For n is positive number, for n greater than 0, यहाँ पर G to the power n जो होगा, G operate with itself n times. G खुद के साथ n times operate होगा. If n is negative, that means n less than 0, then G to the power n यहाँ पर जो होगा, G inverse operate with minus n times. For example, a group with binary operation addition, which is plus, for any element G belongs to G, for n greater than 0, यहाँ पर G to the power n जो होगा, एडिशन में G to the power n को ऐसे यूजुअली डिनोट करते हैं n into G. एडिशन में G to the power n जो होगा, G का n टाइम एडिशन, दैट मीन्स G plus G ऐसे ही n टाइम्स. एंड फॉर n लेस देन 0 मीन्स n इज नेगेटिव, यहाँ पर G to the power n जो होगा एडिशन में, तो ये होगा G इनवर्स to the power minus n, which is equal to minus n into G इनवर्स. तो हमें पता है एडिशन में G का जो इनवर्स एलिमेंट होगा ये होगा माइनस G, तो ये होगा माइनस n टाइम माइनस G. फॉर एग्जाम्पल G to the power 4n प्रूफ विथ ए बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, ये हो जाएगा 4G which is equal to G plus G plus G plus G ऐसे 4 टाइम्स. सिमिलरली G to the power minus 4 यहाँ पर जो होगा, तो यहाँ पर n इज नेगेटिव, तो ये हो जाएगा G इनवर्स माइनस n टाइम्स माइनस 4 which is equal to 4. दैट मीन्स तो G इनवर्स यहाँ पर जो है माइनस G एडिशन में, तो ये हो जाएगा माइनस G प्लस माइनस G प्लस माइनस G प्लस माइनस G ऐसे 4 टाइम्स होगा. नेक्स्ट जो है इंटीग्रल पावर के ऊपर एक प्रॉपर्टी है, लॉ ऑफ पावर इन ग्रुप्स. लेट G be a group and a element G belongs to G for all integer m and n. Their following condition hold. First is G to the power m into G to the power n equal to G to the power m plus n. And second property is G to the power m to the power n equal to G to the power m into n. To prove the first property,
g to the power m into g to the power n equal to g to the power m plus n. There are 4 cases. In first case, for m and n equal to 0. And second case is for m and n is positive, which is for m and n greater than 0. And in third case, where m and n less than 0, that means m and n are negative. And in fourth case, one is negative and one is positive. Here m is greater than 0 and n is less than 0. Let's prove for first case. So here g to the power m into g to the power n equal to g to the power 0 into g to the power 0. So by definition, g to the power 0 is c, which is equal to e into e equal to e. And here g to the power m plus n equal to g to the power 0 plus 0, which is equal to g to the power 0 by definition, which is equal to e. So for the first case, this property is satisfied. Next, for second case, g to the power m into g to the power n equal to g to the power m means by definition g operate with itself m times. That means g into z ऐसे ही m times g into g to the power n means g into z up to n times. So here total number of operation of g with itself is m plus n times. That means here this is equal to g to the power m plus n. Similarly, next check for third case where m and n is negative. That means m less than 0 and n less than 0. तो here अगर हम नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं दैट मीन्स तो ये हो जाएगा माइनस एम ग्रेटर देन 0 एंड माइनस एन ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पर जी टू द पावर एम इंटू जी टू द पावर एन जो होगा तो बाय डेफिनेशन यहाँ पर जी टू द पावर एम जो होगा जी इनवर्स टू द पावर माइनस एम इंटू जी टू द पावर एन जो होगा जी इनवर्स टू द पावर माइनस एन. तो यहाँ पर माइनस एम एंड माइनस एन ग्रेटर देन 0 है. तो बाय केस 2 ये हो जाएगा जी इनवर्स टू द पावर माइनस एम प्लस माइनस एन which is equal to g inverse to the power minus m plus n. So this can be written as g to the power m plus n. And for fourth case, one is positive and one is negative. M greater than 0 and n less than 0. So यहाँ पर n less than 0, that means minus n greater than 0. Again, there are two sub cases. One is for m plus n greater than equal to 0 and in sub case 2, m plus n less than 0. तो इसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ for case 4 and sub case 1. तो यहाँ पर अगर हम g to the power m plus n into g to the power minus n ले ले तो यहाँ पर देखो m plus n greater than equal to 0 and a minus n greater than 0. तो by case 2 हो जाएगा this is equal to g to the power m plus n plus minus n. ये हो गया g to the power m. So here g to the power n multiplying right side in this equation we get g to the power m plus n into g to the power minus n into g to the power n equal to g to the power m into g to the power n. जो g to the power minus n है and g to the power n है. That means ये g जो है minus n times ऑपरेट होगा and यहाँ पर g to the power n is negative. That means g inverse जो है minus n times ऑपरेट होगा. That means n times g into n times g inverse ये कैंसल आउट हो गया. ये हो जाएगा आइडेंटिटी. That implies ये हो जाएगा g to the power m plus n equal to g to the power m into g to the power n. Similarly, next for subcase 2. So here if we take g to the power m into g to the power minus m plus n. So by case 2 this is equal to तो m and minus m यहाँ पर कैंसल आउट हो गया. ये हो जाएगा g to the power minus m. And simply multiplying g to the power minus m left side g to the power minus m into g to the power m into g to the power minus m plus n equal to g to the power minus m into g to the power minus n. तो simply by taking inverse ये तो कैंसल आउट हो गया. तो ये हो जाएगा g to the power n plus n equal to g to the power m into g to the power n. This first property is satisfied for all these 4 cases. That means this first property is true. Next, check for second property g to the power m to the power n equal to g to the power m into m. To prove this, here again we have 3 cases. In case 1, for n equal to 0 and in case 2,
for n is positive, that means n greater than 0. And in case 3, for n is negative, that means n less than 0. So for first case, here n equal to 0, that means g to the power m to the power n equal to g to the power m to the power 0. So by definition, this is e. Yes. And from right hand side, g to the power m into n equal to g to the power m into 0. So this is g to the power 0, which is equal to e. And next, for second case, n is positive. यहाँ पर तो g to the power m to the power n है. That g to the power m मतलब g का जो प्रोडक्ट है m टाइम्स इसका पावर n मतलब g का जो m टाइम प्रोडक्ट एक n प्रोडक्ट होगा n टाइम्स. यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ g जो ऑपरेट हुआ है ये होगा m इंटू n टाइम्स. तो इससे हम लिख सकते हैं g to the power m इंटू n. थर्ड केस n लेस देन 0 और n is negative. So here minus n greater than 0. So here we can write it as g to the power m to the power minus n equal to since here minus n greater than 0, तो by case 2 ये हो जाएगा g to the power m into minus n. So ये हो जाएगा g to the power minus m into n. So here by taking inverse, which is equal to g to the power m to the power n equal to g to the power m into n. So this property is true for all these three cases. Next जो है इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 1, prove that a non-empty set G together with a associative binary operation is a group if for all AB belongs to G there are equation AX equal to P and YA equal to P have a solution in G. तो यहाँ पर हमें एक सेट गिवन है with a associative binary operation. For AP belongs to G, तो इस तो इक्वेशन जो है ax equal to p and ya equal to p इसका सॉल्यूशन अगर दैट मीन्स ये x और y का वैल्यू अगर g में ही एग्जिस्ट करेगा तो ये ग्रुप होगा. तो ऑलरेडी यहाँ पर हमें क्लोजर एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. गिवन है इन ऑर्डर टू शो दिस सेट g इज ग्रुप वी हैव टू प्रूव ओनली आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी. फर्स्ट चेक फॉर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर हमें गिवन है a b belongs to g. Let assume a equal to p and for this equation we can write it as ax equal to a. Let e is the solution of this equation. That means a into e equal to a. E is the solution and given the solution is in the set G. That means e belongs to G. Similarly, let ya equal to a and e dash is the solution of this equation. That means e dash into a equal to a. So here e dash belongs to G. This is denoted as equation 1 and this is denoted as equation 2. Next, for the standard equation ax equal to b, let c is the solution. That means ac equal to b. Then we can write it as e dash into b equal to, so here b equal to a into c. So this is equal to e dash into a into c. So since g satisfied associative property and here c is the solution of this equation, that means c also belongs to g. So by associative property, we can write it as e dash into a into c. So by equation 2, e dash into a equal to a. So here we can write it as e dash into a equal to a into c. A into c equal to b. This implies e dash into b equal to b. This is denoted as equation 3. Similarly, for a general equation ya equal to p, let d is the solution. That means dA equal to b. Here d belongs to g. Then we can write b into e equal to, here b is d into a. So we can write it as d into a into e. We can write it as d into a into a. So here by equation 1, a into e equal to a, which is equal to d into a equal to b. That implies b into e equal to b. That this is denoted as equation 4. So since e dash and e also solution, then e and e dash belongs to g. So here e dash into e equal to, by equation 1, a into e equal to a, that means e dash into e equal to e. And again e dash into e equal to, by equation 2, e dash into a equal to a, that means e dash into e equal to e dash. From the above, e equal to e dash, and from equation 3 and 4, e into b equal to b into e equal to b. So this satisfied identity property. Here e is the identity element. Next, check for inverse property. Since a and e
belongs to G for the equation Ax equal to E, let C is the solution. That means AC equal to E for the equation YA equal to E. Let D is the solution. That means here DA equal to E. Here, by identity property, we can write D equal to D into E. Let this is denoted as equation 1 and this is denoted as equation 2. By equation 1, we can write E as A into C. So here this will be D into A into C. We can write this as D into A into C. And by equation 2, we can write D into A equal to E. So here this is E into C. And here E is identity. So this becomes C. That implies D equal to C. So by equation 1 and 2, we can write it as A into D equal to D into A equal to E. So this satisfied inverse property. That means here D is the inverse of A. So here G is a group. Next, problem number 2. Prove that a group G is a abelian if and only if AB inverse equal to A inverse into B inverse for all A and B belongs to G. तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है अगर G abelian होगा तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा एंड इफ ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करेगा एक ग्रुप तो वो ग्रुप abelian. तो हमें पता है abelian ग्रुप जो होता है इसका जो सारा एलिमेंट होता है ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है. तो प्रूव दिस, लेट अज्यूम G is a abelian group. That means for A and B belongs to C, A into B equal to P into A, since it satisfies commutative property. then यहाँ पर AB का जो इनवर्स होगा by Shoes and Socks property, तो ये हो जाएगा B inverse plus into A inverse. Inverse property A inverse and B inverse also belongs to G. Since G is abelian, so here this can be written as A inverse into B inverse. And conversely, let AB inverse equal to A inverse into B inverse. A into B equal to, so by theorem number 4, we can write A equal to A inverse of inverse and B equal to B inverse of inverse. Then by Shoes and Socks property, this can be written as B inverse into A inverse का inverse, and by this assumption ये हो जाएगा B inverse into B inverse का inverse into A inverse का whole inverse. So again by theorem 4 ये B inverse का जो inverse ये हो जाएगा B and A inverse का जो inverse है ये हो जाएगा A. That implies AB equal to BA. Here the G is abelian. So next जो है problem number 3. Prove that for any element A and B belongs to a group G and any integer n, then A inverse into B into A whole to the power n equal to A inverse into B to the power n into A. To prove this, there are 3 cases. Case 1 for n equal to 0, case 2 for n greater than 0, for case 3 for n less than 0, for n is negative. So for n equal to 0, here A inverse B into A का तो whole to the power n है, ये हो जाएगा A inverse into B into A का whole to the power 0. So by definition of integral power ये हो जाएगा E, which is identity. तो यहाँ पर E को हम ऐसे लिख सकते हैं A inverse B into A, which can be also written as A inverse into B to the power 0 into A, which is equal to A inverse into B to the power n into A. Then for n greater than 0, where n is positive, A inverse into B into A to the power n जो होगा, so by definition of integral power ये होगा इसका n times operation. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं A inverse B into A inverse into B into A inverse up to A into A inverse into B into A. So by inverse property ये हो जाएगा A inverse B, तो ये हो जाएगा E identity element A into E inverse, A into A inverse ये हो जाएगा E into B into E up to E into B to A. So by identity property ये हो जाएगा A inverse B into B, let's say n times B into A, which is equal to A inverse B to the power n into A. Next for n less than 0, that means n is negative.
सो हियर माइनस एन ग्रेटर देन 0, देन यहाँ पर ए इनवर्स b इंटू ए का जो होल टू द पावर n होगा, सिंस n इज नेगेटिव और लेस देन 0, सो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल पावर ये हो जाएगा a इनवर्स b इंटू ए का होल इनवर्स टू द पावर माइनस n। बाय शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी ये हो जाएगा a इनवर्स इंटू b इनवर्स इंटू a इनवर्स का इनवर्स टू द पावर माइनस n, which is equal to a inverse b inverse into a inverse का inverse by theorem 4 equal to a to the power minus n, and here minus n greater than 0, so by case 2 ये हो जाएगा a inverse into b फिर का inverse का to the power minus n into a, तो by definition ये हो जाएगा a inverse into b to the power n into a. So this is proof for all these three cases. Next जो है problem number 4. Find the inverse of a 2 cross 2 matrix A equal to 3 2 1 5 in the general linear group of 2 over Z5. तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा ये सब Z5 का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर देखो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 2, यहाँ पर जो एलिमेंट है ये Z5 का एलिमेंट है। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स एक का जो डिटर्मिनेंट होगा ये होगा 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 2 मॉड 5, तो ये हो जाएगा 13 मॉड 5 हो जाएगा 3। किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है अर्जेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सिंस यहाँ पर फील्ड जो है Z5 ये हो जाएगा अर्जेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मॉड 5। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में इसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है अर्जेंट निकालने का, सिंपली डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर लेंगे। 3 एंड 5 जो है डायगोनल एंट्रीज में है, तो ये हो जाएगा 5 एंड 3 एंड बाकी रिमेनिंग एंट्रीज को नेगेटिव कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -2 -1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये है 3 और 5। 3 जो है नीचे डिवाइड है, तो इसको ऊपर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इनवर्स इंटू 5 -2 -1 3 मॉड 5 होता है। जेड ग्रुप में किसी भी एलिमेंट ए का जो इनवर्स होता है ये होता है m माइनस ए। यहाँ पर 3 इनवर्स जो होगा इन मॉड 5 ये हो जाएगा 5 - 3 ये हो जाएगा 2। सिंपली 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स में, 2 इंटू 5 है 10, 2 इंटू -2 इज -4, 2 इंटू -1 इज -2, 2 इंटू 3 इज 6 मॉड 5। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स होगा 10 मॉड 5 जो होगा ये हो जाएगा 0 एंड -4 मॉड 5 जो होगा 5 इंटू -1 और -5 एंड रिमाइंडर विल बी 1, एंड -2 मॉड 5 जो होगा 5 इंटू -1 और -5 एंड रिमाइंडर विल बी 3। सिमिलरली 6 मॉड 5 जो होगा ये हो जाएगा 1। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।